Our topic of study, comprehension, and discussion is education for modern India. The topic is not education in modern India, it is education for modern India. So that means if we are living in a new world, what should be the objective like? What should be our work like? Now, here it comes a question. First of all, what do you mean by modern India? Modern India refers to the India which has been developing after the advent of British India or after the advent of the British in India. You know that lot of changes what we have been enjoying before, lot of changes had happened from those culture, the ways we have been carrying out things in our ancient past. Well, if we see, we will try to understand and pass through this. There is a growing feeling that in our country our education has not been able to keep pace with times. Keep pace with. The word PACE, pace means speed. So keep pace with times means match with the times. That means the world is moving very fast. Modernization, industrialization is happening very fast. We haven't been able to match up to that. That means everybody feels that our education is compromised. Qualitative, not so qualitative. There is a growing unemployment of the educated. People complete their education, but still they are unemployed and this number is growing. Deterioration means befall. Reduction of the quality. Gunabatta tolgu khasiba. Deterioration of academic standards. Whatever academic standards we had in our school and colleges, the word academic is connected with education, quality and standard of education. There is a befall in the academic standard. Indiscipline is growing, unrest is growing. Unrest means asthirata. Students are striking again and again. And the vitiated atmosphere in educational institution. The word vitiate refers to polluted atmosphere in educational institutions influenced by scandals and dirty games of power politics. You know that during the elections, the political parties get involved and they vitiate the atmosphere in the school or in the college. All serious malady, MALADY, plural maladies. Maladies means diseases, problems. All serious maladies of the education system today. So if we look at today's education, these are the serious problems that we are facing. The teaching quality is not good. Educated people are not able to get an employment. There is indiscipline, there is unrest, and the atmosphere in the educational institution is polluted with power politics. Either there would be a political power or maybe a power created inside the college. They will be doing hooliganism, bullying others, going gundagardi and this thing. These are serious concerns of our education system. They signify that the system needs a revision. We have to revise again. And cleansing, CLEANSING. The word cleansing means deep cleaning. Whatever problems are there, they have to be deeply cleaned, finding the root and removing them. Why so much of focus on education? So much of focus on education is required because education is the bread and butter of any individual. Till the time one individual is 17 or 18 years old, 20 years old, he will be in the care of the parents. So the parents are the God. They are going to give you food to eat, shelter to stay, clothing for your body. But once that phase is over, when you are 20, you are an adult, you are expected to stand on your own feet. To stand on your own feet, your education helps. Their mama's love, father's codings won't work. If you are educated, if you are skilled, you would be able to continue your life with dignity, with much respect. ना सेठी भगवानकर आशीर्वाद कमरे आसीबो ना मांकर गेल ना बापांकर गाड़ी एटी केवल आपणकर स्किल और नॉलेज आपनको हेल्प करे सेथि पई एजुकेशन इज योर पेरेंट इज योर मदर एंड फादर सो इन दिस वे education is a very important activity and Abraham Lincoln says that it is the most important activity for any country, for any human. That means any human should be directly or indirectly involved in the process of education. He may be a politician, he may be a scientist, he may be X, he may be Y, he may be Z. But
he or she should be involved in education because it is important for building up a human being. Are you clear? Why do you think APJ Abdul Kalam was making visits to the universities? What is the need? Was he getting extra money for it? No, because he considered that this is a serious activity to be involved in. India has still not been able to break away. Break away means separate itself from the nostalgia. Nostalgia, remembering the past and mellowing over that. When we remember our past and keep on regretting, my past was like this, I should be like that. That is what is called as nostalgia. We have not been able to break away from the nostalgia of our British connection. Now you know that in 1835, Lord Macaulay, he introduced English education system in India. Why did they introduce English pattern education? Previously, we had education. We had Gurukula ashramas, where the children have to be inside the residential school of the what? Of the gurus. Not like today's residential schools, the discipline was a lot bit different. Because today's residential school focus on one type of activity, while there they focused on variety of activities. There used to be ashramas. Among the Islamic community, there used to be madrasas, and there used to be church or mission schools. Alright, convent schools. They were there. After British, from 1835, they introduced anglicized pattern. Means a fixed syllabus, fixed subjects of teaching, appropriate times of teaching, and etc. etc. So the old age tradition was broken. Why did they do it? They did it for their own self-interest. Lord Macaulay, in his minute, in the British Parliament, has clearly spoken. What he has spoken, I tell you right now. And you carefully analyze whether it was a good intention or a bad intention. He says, with little differences from what exactly he said, I have travelled to the length and breadth of this country. I have crossed the hills, the mountains, and even the fountains. Such adamant are the people in this country, so proud of their rich cultural heritage, that it is very difficult to subjugate them. So if we wish to subjugate them, then we have to break the very backbone of the country, that is, the culture in which they take pride thereof. So, educating people in English is the only way by which we can break such a pride. We are thereby going to produce men which are Indian in flesh and blood and color, but English in taste and language and speech. ମୁଁ ଏ ଦେଶର ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିଲି। ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାଭିମାନ କେତେ ଅଧିକା, ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇକି, ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଏତେ ଅଧିକା କି ଆମକୁ ଦମନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦମନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେହି କଲଚରଟାକୁ ବଦଳେଇବା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମାନେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ହେଇପାରିବ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନକୁ ସେଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଲେ, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଭଳି ଲୋକ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ହେଇଥିବେ ସ୍କିନ୍ରେ, କଲର୍ରେ, ଆଉ ଫ୍ଲେଶ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ହେଇଥିବେ ରହଣୀରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଚଳଣୀରେ। So, do you think was it a healthy decision? Simply the objective was to take out our independent thinking. But that British connection which was established long back, we have not been able to break away with that. ଆମେ ତାକୁ ବି ତ ଛାଡ଼ି ପାରିନୁ। The British education system was meant to ring out. The word is ring out. Ring out means create a circle and separate. ଗୋଟେ circle କରିକି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ a class of elite. Elite means ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, rich, right? ଯେଉଁମାନେ respected individuals. So କିଛି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିକି, okay, British education system ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା to carve out and create an elite group to rule others. କିଛି ଜଣକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ କମନ ମାସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। And was not a system of education for the masses. ଏଇଟା ଏମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। But we accepted it and we kept on running that. We have hungrily, ଭୋକିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ lapped up. Lapped up means we have kept it in our lap, କୋଳରେ କୋଳିକି ଧରିଛୁ। This legacy
Legacy means what one generation leaves for the next generation, right? With will. जो जिनसटा गोटे जनरेशन आ गोटे जनरेशन ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତ 1835 ରେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଧରିକି ବସିଗଲୁ. This legacy of British Raj, even after independence, without using our discretion, no, the ability to differentiate with right and wrong, ठीक ଆଉ ଭୁଲ ଭିତରେ ବିବେଚନା କରିବା ତାକୁ discretion କୁହାଯାଏ. ଆମେ discretion ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ upon scientific reasoning. We don't scientifically reason what we should do and what we should not do. An average student is compulsively driven to college. Compulsively driven to college means forcefully. You know what? Gandhi could understand this problem. And Gandhi long back proposed a system of education that was called as Nai Talim. Under Nai Talim, Gandhi told everybody does not have to go to higher education. He said primary education, even little bit of upper primary education should be compulsorily given to all without any discrimination, but not higher education. Gandhi told take only those to secondary education or higher education, those who are eligible. सेई माननको ही आगको पढेबाको नियो जो माननको पाखरे दक्षता अछि, right? That means the person should be mentally physically capable to carry on higher education, otherwise he should not be put into. But what we do, we compulsorily push our children. If he is doing even wrong and bad, if he is not scoring well, there is always a college for him, right? भल कॉलेज रे सीट मिललानी व्यस्त होनी बहुत गुडे कॉलेज खोली सरछि जोटी कि आपण जते भी खराब मार्क रखंतु admission टे मिल जियो. We compulsively force them into college. Why? To get a degree. That is deemed मतलब considered to be a guarantee of a white collar job. Now what do you mean by white collar job? Executives, managers, they put on white collar shirt. White collar job. So that means managerial job, executive job. जो job गुड़ाक AC chamber रे बसिकी करा जाए. So आमे कौन करूछु भाबुछु कि डिग्री टे मिली गले हमको गोटे सही बड़ा गोड़ उठा जॉब टे मिल जिवो जोटी हमें गोटे के आराम रे बसिबा, and then we will be carrying out and living a healthy life, right? And the cinemas keep on encouraging that, car and all. In a city, nobody wants to live in a village. So in the world we have stopped respecting manual jobs. White collars, opposite word is blue collar, because the people who do labor, they put on blue collar shirts. So blue collar means manual jobs, white collar means intellectual jobs. Everybody wants to do that kind of job. No one bothers about something called as quality of education. When people are put into the colleges, institutions, universities, nobody really cares that कौन पढ़ा जाए. ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି କି ଡିଗ୍ରୀଟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କେତେ ସହଜରେ ମିଳିବ ସେତେ ଭଲ, ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ମିଳିଲା ଆହୁରି ଭଲ, ଏକ୍ସାମ୍ରେ କପି କରିକି ମିଳିଲେ ଭଲ, ବ୍ୟାକ୍ ଆଲାଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ. People check in this way as if the degree is everything. So the aim of life is to somehow pass the examination and get a job. So that's what we live. तथा शीघ्र पाठ सरिबो तापर गोटे चाकरी करिबा. Everyone waxes eloquent, waxes, polishes. जदि काहाको कुहा जीवो, right, कहिबा पई समस्ते तेल मानिकी बढ़िया से चिकण करिकी कहिबे. Eloquent means wax मतलब polish, POLISH. Eloquent मतलब बाग्मिता, when you can speak well. जेतेबेले जणे भलो भाबे कहि पारे ताको eloquent कुहा जाय. Everybody waxes eloquent, right? जदि ज्ञानी बुद्धिमान लोक मानकु कहि दिया जीवो कि तमे कुह, everybody will speak about our decadent educational system, befalling educational system, जहार क्षय घटुची, पेरिश करूची, जोटा क्षय होबाक जाउची, सेही भली एजुकेशन सिस्टम विषय समस्त बढ़िया से क्रिटिसाइज करिवे. बट द आउटकम माने रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग कॉन्क्रीट टू चेंज द सिस्टम इज वेरी लिमिटेड. किंतु ताकू बदलिया को केही चाहिबे नाही. क्लियर? किछ तो बदलनी समस्ते तो कहउछंती. During 25 years span, 3 commissions were set up. 25 वर्ष भितर 3टा कमिशन तैयारी करा गला, headed by eminent educationists. Eminent means respected educationists. जो माने एजुकेशन को बुझंती से बड़ी ज्ञानी लोक माने 3टा कमिशन तैयारी करके recommendation देले. The first one was University Education Commission in 1948, headed by Sarvepalli Radhakrishnan. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आमे जेतेबेले इंडिपेंडेंट हेलु ना 47 रे आमे प्रथमे प्राइमरी एजुकेशन कथा भाबिलुनु. आमे भाबिलु सीधा सळक यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन तेडा लेवल रे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. तो आमे सीधा टर्शियरी एजुकेशन ऊपर काम करलु. व्हाई?
because at that point of time we are becoming independent. We wanted to be self-reliant as quickly as possible. जते शीघ्र संभव आमे जो भोकिला लोक मरुचंदी एटसेट्रा एटसेट्रा एंड प्रॉब्लम्स वे पासिंग से केमति रिकवर करबा तार सॉल्यूशन कोन लोकर कि नो आगो यूनिवर्सिटी ऊपर काम करबा दरकार. So in this way Radhakrishnan commission was appointed. कोन हितला डिटेल तमे पढि परिबो. Then तापरे by 52 we started another for secondary education. Secondary, higher secondary, right? Secondary means high school, higher secondary matlab plus 2, and that was Mudaliar commission. Finally D.S. Kothari, Dr. D.S. Kothari in 64, he created another commission called as Kothari Commission. All these commissions suggested many useful things, but when it came to implementation, taku jetebele implement karibar samay asila, mane karyakari karibar samay asila, we all failed. Very little was accomplished. बहुत कम जिनस ही achieve करा ही पारला, because budget allocation to education was discouragingly low. We neglected our education just after independence and for so many years to come. Japan was devastated in the Second World War. Hiroshima, Nagasaki upare fat man, little boy or fat man respectively dita bomba padila. Automatically these two islands were destroyed. The Japanese economy was ravished. Ei bhari economy re the Japanese Prime Minister took a strong decision. He told that I am going to allocate 60% of my budget to education. मु budget 60% education spend करिबी. It was a drastic decision in those points of time. Reporters asked, why? Kahi? Then he says, I am not investing now, I am investing for next 14 years. मु आसंता 14 वर्ष पे इन्वेस्ट करूछे and it will give results. आउ तांग कथा सत्य हैला. जापान दर बजेट को एमती मॉडिफाई कला इकोनॉमिक पॉलिसी को that by 1970s क्रॉस कला बेलको Japan is one of the biggest electronic manufacturers. Automobile manufacturers, company Suzuki, right? Then Honda, then Yamaha to start kari, Kawasaki automobile to start kari ki, all the Japanese companies like Sony and all electronic giants, Casio, these all have popped up because they invested in people, they invested in education. But in India, till today, of our big budget, we allocate hardly 2%, 1.5% for education. Not only that, बेसिक एजुकेशन को एन्श्योर करिबा पई सर्व शिक्षा अभियान टू मेक इट अ फंडामेंटल राइट आमे तो 2002 मसिया कर देलु. सो वी टुक मोर देन 50 इयर्स टू गिव द बेसिक राइट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन. कंपलसरी एजुकेशन को गोटे अधिकार करिबा पई, मौलिक अधिकार करिबा पई हमको एति वर्ष लाग गला. सो दैट मीन्स वी हैव नेवर स्पेंट इन द एरिया अरेना ऑफ एजुकेशन एज अ कंट्री. आर यू क्लियर? Educational ideals and goals of a country are determined by the requirements. कौनसी country को प्रकार ideal, को प्रकार आदर्श को मानिबो, को प्रकार शिक्षार आदर्श को मानिबो, that is determined by the requirement, times and social order. से समयर सामाजिक परिस्थिति, moral, value, culture और requirement हिसाब रे. And not only that, its economy and resources आपको भी देखियो को पड़े. So not only it's not like that India did not want to, we didn't have money for the same too. Same was within many other countries. However, country माने कौन करंती politically decision गुडा को जत्ते बड़े नियंती ए सबु जिनस को विचार करके को भया education रहिबो सेटा को decide करंती. And educational aims differ with different social system. अलगा अलगा सामाजिक व्यवस्था रे education रो system ता मध्य अलगा अलगा ही की रहे. For example, in the communist country, these are the countries who believe in communism. That means Samyavada. No, so this is a form where ownership of the resources lies with the center, with the government. You cannot be the owner of a property. You cannot generate and keep wealth for yourself. Communist countries like China, the students are not encouraged to think independently. Seti pillamanku independently bhabiya pe allow hi kara jayeni. Like few years back, China imposed a ban on the social network sites. China restaurant बंद कर देले. नहीं, कहीं की because you access social networking site, you get to know the world. नेला परे तमरा ब्रेन टा भलो होइचिबो. You try to think independently. जेमिति जते बेले भारत रे जेते से वेस्टर्न लिटरेचर गुडा का पढ़िले कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस, लिबर्टी एगुडा सब जेते बेले भारत रे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस गुडा करे पढ़ा हला. जेते बेले भारत रे नेशनलिज्म असला ना, तागुर नेशनलिज्म तो कोटी पोते गेला. We have been subjugated from 1600 and we rise after 1850. और 150 वर्ष तक हम मुंडे टेक नथिले. 250 years पर हठात कि जदि मुंडा टेकी लेतार कारण होची एजुकेशन. It is the silent force of education that changes the society. In the same manner,
एटी से मैंने कौन कले कि जदि तमे ओपन कर दबो एजुकेशन को लिबरल कर दबो देन पीपल विल थिंक इंडिपेंडेंटली दे विल टेक देयर ओन डिसीजन तम कथा सुनियो के सो दे मेक एजुकेशन लाइक दैट बट आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट ऑर्थोडॉक्स मीन्स अनविलिंग टू चेंज जी बदलिबा को चाहेनी ओके ताको ऑर्थोडॉक्स कहा जाए सो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट क्रीड माने जाति राइट संप्रदाय एज एन अल्टीमेट टैक्ट बुझेला टैक्ट मीन्स टेक्निक सो दिस इज एन अल्टीमेट टैक्ट टैक्टिक्स दे अप्लाई कि सेमाने एजुकेशन टाको ओपन ही करंतरी दिस इज अबाउट कम्युनिस्ट कंट्री इट इज अ डिफरेंट थिंग दैट कम्युनिस्ट ऑर्थोडॉक्सी इज कॉन्स्टेंटली अंडरगॉन रिविजन किंतु एकता गोटे अलग कथा कि सेमाने एमती गोटे आइडियोलॉजी नेकी मध्य तांकर निजर आइडियोलॉजी बारंबार रिवाइज करछन्ते यू सी देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म मार्क्सिज्म स्टार्ट हला तापर लेनिनिज्म देन कम्स वेरियड साइड ऑफ कम्युनिज्म तमे देखुछो the way which was observed during the Bolshevik revolution first world war military communism तापर आसुची military communism रो मुनी maoism तापर so fascism ए सब प्रकार रो आइडियोलॉजी गुडक बदले चलची rules of centralization बदलुची तामाने माने स्टेबल नहंती in the fascist country माने those who believe in centralization of power with one individual dictator rule एकछत्रवादी शासन जेमे हिटलर थिला बेनितो मुसोलिनी थिला इटली रे सो ए कंट्री गुडाक से माने कोन करंदी द विल ऑफ द डिक्टेटर इज द लास्ट वर्ड इन एजुकेशन मेरा वचन ही है मेरा शासन मींस व्हाटएवर आई से दैट वुड बी द एजुकेशन लाइक तमे किछि चेंज करियो मु कहबे बही काटो तमे बही काटियो मु कहबे ए बहीटा पढो तमे पढिबो सो द डिक्टेटर एक्चुअली गवर्न्स एंड कंट्रोल्स द अफेयर theologians and priests you know there are some countries which are driven by theocracy means government in the name of religion and in the name of god किछिटा कंट्री थाई जोटा थियोक्रेटिक थांती जेम कि पाकिस्तान राइट तो सेठी कोन करे जे एजुकेशन दे बिलीव इन imparting education strictly in conformity means matching with the tenets established टेक्स्ट मीन्स रिलीजियस प्रिंसिपल्स तामाने कुरान रे जो भली भाबरे लिखाई छी से भली भाबरे पढिबो गीता रे जो भली लिखाई छी से भली भाबरे पढिबो जदि गोटे एमदी कंट्री हेतिबो जदि थियोक्रेटिक कंट्री हेतिबो से माने कोन करबे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू रो सब एजुकेशन दो चेष्टा करबे दैट मीन्स इट इज नॉट मैचिंग द रिलीजन इट्स नॉट एजुकेशन इट हैज हैपेंड इन एवरी सिविलाइजेशन इन इस्लामिक कंट्रीज देयर आर मेनी इन क्रिश्चियन कंट्रीज देयर आर मेनी इन्फॉर्म्ड बाय अ फैनेटिकल टेम्पर अपोज्ड टू इनोवेशंस fanatical temper what do you mean by the word fanatic fanatic को कहा जिबत धर्मांध धर्म को नहीं जे अंध they are informed they are educated but they are educated in a fanatic way माने religious principle को तांका मुंडरे एमती पसे दिया जीवो तांकर open thinking ही नथिबो so closed that in the name of religion and god they tear their belly put some bombs into that, stitch it out and blast themselves. We call them terrorists. Suicide squad, whatever you can call it to be. So point is that set of fanaticism helani dharmandha kari docho. You are informed but like a fanatic and you are opposed to innovations. Innovation means nua udbhavana. Many new discovery, new temper taku tame oppose karibo, virodh karibo. Eita kotibe theocratic country. So what you see here that the politics of the state, they try to modify education as they desire, as they want. Yes or no? It has happened for India also for a long time. History for a long time was taught in the manner that served our national interest. आमा को सुहेल भलिया इतिहास हमको बहुत समय तक पढ़ा जाए छे. Yes or no? Bright and burning example. You take सिपाही riot, सिपाही विद्रोह. ओ गोटे इंडिया स्टूडेंट को पचारिबो सिपाही विद्रोह रे मिसितबा कि जन लोकन ना कह से आग कहबो लक्ष्मी बाई. तापर कहबो तात्या टोपे. चंदन हजूरी कहि पारे. केबे हेले गोटे मुस्लिम नाटे पाटरे पसिबोनी जदि पसिबो से बहादुर सातु काहे कि तुम तक पढ़े ही ना अब हमें तो पढ़ी छे ना हिंदू मुस्लिम दी जन जाके मिसिक सिपाही विद्रोह करथले सो व्हाई डू यू रिमेंबर मंगल पांडे ओनली व्हाई डोंट यू रिमेंबर एनी मुस्लिम exactly no you have remembered because you are preparing for it but others there are many who don't remember so that means history has been taught partially in India same also applies to Pakistan गोटे सर्वे कराइतला पाकिस्तान रो टेक्स्ट बुक गुडा नियागला हिस्ट्री रो सेडी कोन होची हरप्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन स्टार्ट होची राइट करी कि इट गोस and then suddenly at around 500 BC सेटू पूरा ब्लैंक आउ किछि नाही हिस्ट्री then again begins with Babur then again begins with are you getting my point islamic history तापर स्टार्ट होची काई से जो भितरे कोन जोटी वैदिक सिविलाइजेशन थिला तमे कहीं पढो ना because they don't want to teach that
So that is why the government controls what will be the education like. They condemn the questioning spirit by calling it as a heresy. If you ask a question, right, tahale tuमको कहा जीवा you are heresy. Heresy means disbeliever. You disbeliever in the sense you don't have a faith. नास्तिक kind of. So you are considered like a heresy. जदि तमे प्रश्न कल ता माने religion जहा कहिछि सेटा ठीक over clear. Has it not happened in Christianity, in Western civilization? ए जो Socrates, Greek philosopher, तांको बिशप को काहे कहले? Because he was asking questions to God. Copernicus केते बढ़िया से mathematical theory काढले कि तू पब्लिश करले डरी because he was a Christian father. He was a member of the church. तो से चर्च को होची अर्थ होची सेंटर तांकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन रे बाहरुची सन इज द सेंटर से पब्लिश ही कलेनी डरी की मला बेलू को गोटे स्टूडेंट को डाकी कहउचंदी कि मु मरि गला परे प्लीज पब्लिश करियो एंड इट वाज पब्लिश्ड. So you see that the domination of the polity and the religion remains. Then what should be a good citizen like? A good citizen in a democratic country, right, must be liberal, open-minded, tolerant, sahisnu, above parochialism. Above parochialism means narrow-mindedness. P-R-O-C-H-I-L-ism. Narrow-mindedness. गोटे भल एजुकेटेड लोक ए सबु बाहरे रहिबा उचित. A man of intellectual and moral integrity. Intellectual integrity, intellectually sound, morally integrated, okay, public spirited, लोकमान को बाई चिंता करुथबो, and ability to think for himself, निज पाई भी चिंता करुथबो. So this is what is called जगत हिताय आत्मन मोक्षार्थम. Okay, निजर भल पाई काम करि पारुथबो ता सहित समाजर मंगल करुथबो. एतिकी सब हेले गोटे डेमोक्रेटिक स्टेट रे भल नागरिकटे तयारी होय. लिबरल, टॉलरेंट, parochialism, narrow-mindedness नथिबो, intellectual, morally integrated हेतिबो. So he must always be guided by national interest and welfare of all. समस्तंक मंगल विषय रे भाबुथबो. A democratic state is essentially a welfare state. Democratic state माने होची it should be a welfare state. That means public welfare should be at the topmost priority. It is to this philosophy and way of life that India has pledged. India एक philosophy को promise करिछि because in our place of the promise and tied itself, because in our constitution we have declared in the preamble that what ideology we want to do, we want to share, we want to keep for ourselves. Clear? Since India is a democratic country, our education should develop all these things to make a good citizen. तमने भलो नागरिक तयारी करिबा दायित्वटा पुणी education रो. One of the aims of education is to transmit national culture to the student. Education रो बहुत बड़े एम थाए. राष्ट्रीय कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति पिलामानक भितरकु नबा गोटे education रो उद्देश्य. Now you see that India has many aspects of culture. For example, in Indian culture, teachers are respected. We touch our feet of our elder, right? We have many rituals connected with our life, connected with our religion. This is our national culture. भारत रो कोनसी कोन बुझाओ तमे एई बडी प्रकार रो जिंस गुडा को पाइबो. एटा नेक्स्ट जनरेशन रो स्टूडेंट पाक को ट्रांसमिट होबा दरकार. Indian education system at present does not promote understanding of India's composite culture. Composite, created out of many things. You see, here you travel 50 kilometers, language changes. People change, their life and lifestyle change. That's why it is a big country of composite culture. Here culture has got united. एते प्रकार रो विविधता ए देश भितर अछि, किंतु एते प्रकार विविधता काहे की अछि तार कारण कोन से माने कोन मीन करंती ताकू आमे हमर पिला मानन को बुझेई पारिना. Result is that we have adopted an attitude of aping Western culture blindly. तो जते बेले आमे को न मिलुची आमे कोन करिछो जो जिनसटा Western culture ताकू फटकिना एक्सेप्ट करनो छु. Like I want to give an example. You might have seen some people come putting on saffron, गेरुआ पिंदी की किछि जन लोक आसंदी. से माने हाथ रे गोटे एकता धर थांती. टंग 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 ओके काइंड ऑफ एंड देन तुम्बा पड़थिबो. ताउर मुंडे ठेका बिनथिबे, चंदन देथिबे. आउ से माने आसी की गीत गांती, भजन गांती, भागवत रो सेक्शंस गुडा गांती. नाही की तांको हमर भाषा रे जोगी बोली कहै छै. लोकली हम जोगी बोली कहू. But an Indian student who has recently been grown up say कौन कहबो he is a beggar. My dear, he is not a beggar. He is a yogi because he is in bhakti yoga. What is the objective of bhakti yoga? You sing God's name and propagate God's name.
केते लोक नकटी कहते नहीं मठरे साधु संतरा कौन कर खाली अलसंग भाया खाई बस what they are doing is beyond your understanding, right? They are living a happy life. What's your problem? से माने आराम रे जति डालमा भात खाई खुशी रे अछंती गोटी दिहड़ ड्रेस रे से माने सेतरे चलुचंती दरकार पड़ले मझे मझे आसी कि केते बेले आपन को दान दक्षिणा नोतिबे से माने जहाडा भी करूचंती सेतरे आपन को कोन असुविधा अछि बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर बट सिंपली लेबल बेगर्स से जम्मा बेगर नुहे से ज्ञानी लोकटे he had learned Bhagavata, he had remembered so many bhajanas and etc and he is spending a life like an ascetic, so how can you say that he does nothing? किंतु आम जब यही कल्चर को न बुझा आम ताको कौन प्रथम कथा डिसरेस्पेक्ट करिबा देन वी विल एप एंड वेस्टर्न कल्चर एपिंग APING मांकड़क भलिया अनुकरण करिबा मिमिकिंग लाइक अ मंकी मिमिक्स इन द सेम मैनर वी विल मिमिक अ वेस्टर्न कल्चर क्लियर blindly. There is a great gulf between the educated few and uneducated many. अल्प किछि जन लोक जो माने एजुकेटेड आ बहुत जन जो मान को पाखरे एजुकेशन नहीं तांको भितरे गोटे गल्फ अछि गल्फ माने अ बिग सेपरेशन ओके सो देयर इज अ फाटट हे अछि मासेस अछंदी जो मान को पाखरे शिक्षा नहीं आ एमती भी लोक अछंदी जो को पाखरे अल्प किछि जन तांको पाखरे शिक्षा अछि तांको भितरे गल्फ इज बिग वाइड difficult to bridge. The westernized elite, as I told you, Sambanta Sranira Loka, respected people, जो माने western culture grow up करिसंती, and the traditional superstitious masses. आउ एमिति अनेक लोक अछंती, जो माने पारंपरिक परंपरा रे विश्वास करंती, superstitious भी हेथाई परंती, अंधविश्वास भी हेथाई परंती. Clear? The educated classes know nothing of their rich cultural heritage. भारतर सांस्कृतिक ऐतिह्य केते रिच सेटा को एजुकेटेड लोक माने तो जमा बुझंती नि काहे कि आमे तो केबे पढिया को चेष्टा करिनो हे लॉन्ग बिफोर जेतबे जो यूपीएससी ओपीएससी रे कोन सोसाइटी कल्चर रो पेपर रहिला बोली सिना पिला माने पढिले नहले सोसाइटी कल्चर को कोडी पढुले हिस्ट्री बहिरे थाए किंतु हु एन्जॉयज हिस्ट्री इट्स अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट पीपल डोंट स्टडी अबाउट दैट से पुनी अल्प कर थाए सो वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन and we are not able to take pride in our culture जदि आमे निजर कल्चर टा को न बुझिबा त ताको नि कि गर्व केम अनुभव करबा we will feel that we are inferior so we and not harbor feelings as inferiority complex बुझेला तो हमर हमें कोन करिवो भाबियो कि सेमानकर सब सब भला भला हमर सब जाक खराब at the same time laudable emotions laudable means loud clear and appreciable प्रशंसनीय emotions of patriotism and nationalism should not be jingoistic ठीक अछि तो हमर नेशनलिज्म राष्ट्र को भल पाइबा सेते बेले आसीबो जेते बेले हमें एतिकी बुझिबा कि मो देशर कल्चरटा महान जदि सेटा मु न बुझिली ताहेले मु निजको वेस्टर्न कल्चर सहित कंपेयर करिकि सब बेले कोन करिवि आई फील बैड ओके इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मो बिरा आसीबो किंतु ए जो पैट्रियटिज्म देशभक्ति नेशनलिज्म राष्ट्रबोध ए फीलिंग गुडाको ए इमोशन गुडाको एते कैरी भी करा जीवनी टू बिकम अ जिंगोइस्टिक वन जिंगोइस्टिक मतलब फैनेटिकली पेट्रियट जेमिति गोटे धर्मांध थिला सेमिति देशभक्ति अंध लोक माने भी थांती बुझी पाछंती पेट्रियटिज्म ना रे से माने किछि भी करिवे ऑलराइट फॉर एग्जांपल गोटे इंडिया पाकिस्तान मैच चलछि और पाकिस्तानी लोकटे प्लेयर टे सिक्सटे हिट कला बढ़िया सिक्सटे हिट कला गोटे मुस्लिम लोकटे सेठी थिला आउ ताली बाडे देला तमे कोन कलो ताको गाड़ी देलो चेची देलो जाकी ता दुकानटा को भांगी देलो तार भूलटा कोन ताली बाडेला तो you consider that he is a Pakistani just because he clapped. This is jingoistic. Are you clear? So एटा देशभक्ति नुह एटा जिंगोइज्म so that should not be carried to that extent एते राष्ट्रभक्त हबनी जे तमे कहबा हम देशर सबु भल आम वेदरे किछि भूल नाही हमर पुराण रे सबु बढ़िया जहा लिखाई छि ठीक एटा केबे भूल हेई परिबनी माने मनु केबे भूल करि परिबेनी वेद व्यास केबे भूल करि परिबेनी एई भले जदि आपनकर चिंताधारा गुडा रहिला ताहाले मध्ये एटा जिंगोइस्टिक देन यू आर नॉट ओपनली थिंकिंग आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जिंगोइज्म राइट फैनेटिक नेशनलिज्म education should not breed cultural and political chauvinism means considering yourself to be superior to others निजको अन्य मानक ठारू बेहतर बोली भाबिबा ताको चॉविनिज्म कहा जाए एजुकेशन केबे हेले पॉलिटिकली हो किबा कल्चरली हो हमको बड़े हम गोटे बड़टे बोली हमको भाबिबा कथा नुआ
बहुत जन देखी ना सब कहते इंडिया ना सब भल आयुर्वेद इज द बेस्ट होते अनेक गुड़ा कहीं बाहर था आयुर्वेद इज अ गुड मेडिसिनल प्रैक्टिस सो इज होमियोपैथी सो इज एलोपैथी प्रत्येक मेडिसिनल सिस्टम रो निजर निजर डिमेरिट अच्छी किंतु जो एलोपैथ कहूँ एलोपैथी ही भल बाकी सब जाक बेकार कि जो होमियोपैथी कहूँ होमियोपैथी ही भल बाकी सब जाक बेकार से चौविनिस्टिक से निजर कथाटी को सबुठ भल बोली भावुची अन्य मानक नगण्य करुची सो इन द सेम मैनर वी शुड नॉट बिकम चौविनिस्टिक आर क्लियर एजुकेशन मस्ट बी फॉर वर्ल्ड सिटीजनशिप आमे पूरा विश्व नागरिक हवा एंड cosmopolitanism means one who can live in any polity in any state in any city ताको कहते विश्व नागरिक विश्ववासी जी कि कौन सी भी जगह रही पारिबो कहबार उद्देश्य होची एजुकेशन आपन को एते स्ट्रांग करबा दरकार एबल करबा दरकार कि आपन केवल इंडिया ओडिशा कटक सिटीजन न हेगे यू बिकम द कॉस्मोपॉलिटन मींस योर ब्रॉड आउटलुक योर थिंकिंग शुड बी दैट ब्रॉड our history books give us accounts of exploit माने शोषण exploits of conquerors as national heroes take any history book आपण जहाँ जहाँ घोषिबे लेट एंशिएंट रु मिडिवल तो आरंभ करके मॉडर्न पर्यंत जो मानक ना घोषिबे से मानक भितरु अधिकांश थिबे राजा नो कि आ राजा नाटा सुनी लोक मान को भारी भल लगे किंतु एक्चुअली राजाटा किए जी गोटे घरे रोला तार बेसी जमी को लोभ है से जमी को अख्तियार करने किछिटा सैनिक को पठेला शस्त्र धरिकी जमी छड़ेकी सेठी पोती देकी आस मार्कर मानिले भल कथा नहले मारदेबू he is a land mafia in other words his only intention to create an empire say conqueror माने होचंती हमर नेशनल हीरो okay I won't tell the names of the kings right ये insulted feel करियो एक्स्ट्रा राजा वाइर राजा से मैं एक्चुअली कौन करथिले जमी तो दखल करथिले they were trying to rule so they our history books are filled with about them invaders जो माने बाहर आसी से गजनी हो घोरी हो whatever any invader तांको में माने किछु काने से माने से कि मेंचे लोग मारी की लुटी की निकी पड़ेले don't you are you not asked सोमनाथ मंदिर केते थरा लुंठन हिथिला के लुंठन करिला you are being asked he is an invader तांको में घोषिछु sea pirate जलदस्यु जो माने कोन करंती शिप गुडा को लुटी नियंती and they are the nation's pride okay they have been kings indian kings जो माने समुद्र ऊपर जाके कोन करे लुटती से मन को हमें कहि राष्ट्र गौरव तांको विषय हिस्ट्री बही भर्ती crafty diplomat crafty means extremely intelligent शातिर okay crafty diplomat कूटनीतिज्ञ notorious माने extremely naughty and dangerous ताको कहजिबो notorious for their cunning means चतुरता okay so crafty diplomat कूटनीतिज्ञ माननको आमे पढू केते कूटनीति करिकि से माने एई कामटा कर देले ताकि लैंड छड़े आणले ताकु लैंड अक्वायर कले एटसेट्रा बुझिला एंड डिसीट एज ग्रेट स्टेट्समैन डिसीट माने ठक चीटर्स मानंकु आमे स्टेट्समैन हिसाब रे भाबू राष्ट्रनायक स्टेट्समैन मीन्स अ पॉलिटिशियन हु शेप्स द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन राइट वी रीड अबाउट देम वी रीड अबाउट इंपेरियलिस्ट्स जे इंपेरियलिज्म रे विश्वास करे साम्राज्यवाद imperialist means acquiring more land lekho so word guda important so imperialist means acquiring more land one who wants to acquire more and more land ताको मन रखो we remember them yes or no कौन से जो कि राजा दिले हमर कांची रु आकोटी कृष्ण रु कावेरी पर्यंत जीति गले अगंगा गोदावरी जीति गले so that means he was an imperialist he was trying to acquire more and more territory who carve out extensive empire से माने विराट साम्राज्य तैयारी करचंती by fraud and violence बेड़े बेड़े ठकी और बेड़े बेड़े हिंसा रे and plunge माने पानी भीतर को पकेबा take a dive into water okay so throw into the water their nation तो एठी कहा जाउची into disastrous wars केवल निजर साम्राज्य एक्सपेंशन रो इच्छा पाई से माने डिजास्ट्रस समथिंग व्हिच ब्रिंग्स अ ग्रेट लॉस सेही भड़िया वॉर रे देशटा को पके दियंती से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो आर इट क्लियर वी कॉल देम द मैन ऑफ डेस्टिनी से माने होचंती भाग्य विधाता राइट इट कुड बी एनी किंग इट कुड बी एनी लीडर राइट दे हैव शेपर्स ऑफ द नेशन
तो हिस्ट्री बही गुड़ा करे हिस्ट्री बुक्स एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन एथरे सब भर्ती करके रखाई छी। हिस्ट्री बुक्स एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन मस्ट एम्फसाइज माने गुरुत्व आरोप करबा ले स्ट्रेस अपॉन हिस्ट्री बही सब बेले स्ट्रेस दबा दरकार अपॉन द यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेस। आमे राष्ट्र राष्ट्र भितर कौन डिफरेंस अच्छी ता उपरे गुरुत्व नदे समानता कौन अच्छी ताकू पढ़ेबा दरकार। अकाउंट्स ऑफ ग्रेट राइटर्स केते बड़ बड़ लेखक जाइछन्ती तांका विषय रे पढ़ेबा दरकार। साइंटिस्ट का विषय रे पढ़ेबा दरकार। ह्यूमनिस्टिक फिलोसोफर्स मानविक दर्शन दार्शनिक जो माने रहिले जो माने मानव बोध उपरे काम करंती तांकर वर्क विषय रे पढ़ेबा दरकार। एंड प्रोफाउंडली रिलीजियस मैन जो माने प्रोफाउंड मतलब एस्टाब्लिश्ड जो माने एस्टाब्लिश्ड रिलीजियस पीपल धर्म को भल भाव बुझंती। अबाइडिंग एंड एन अबाइडिंग फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज जो माने अध्यात्म पर विश्वास रखते सेमन को ऊपर। सोशल रिफॉर्मर का विषय रे एंड अदर मेन विथ कंस्ट्रक्टिव जीनियस आमे ए जो लुटुथिबा लोक मान विषय रे न पढ़ी जदि ए कंस्ट्रक्टिव जीनियस माने विजडम ओके प्रज्ञा ए जो कंस्ट्रक्टिव जीनियस जो मानकर अच्छी से मानक विषय रे जदि इतिहास बहीटा को भर्ती करते ताले भल होंदा ऑथर सजेस्ट करछन्ते क्लियर। As these people are true benefactors, benefactor means somebody who has given a benefit. एई माने ही मानव समाज को प्रकृत रे दिग्दर्शन देछन्ति किंतु आमे तांको विषय पढुना क्लियर। एजुकेशन should aim at producing ideal men. एजुकेशन रो उद्देश्य होची आदर्श मनुष्य तैयारी करबा who are cultured जो माने संस्कृत तांकर संस्कार हेतिबो माने एनिमल भलिया बिहेव करिबेनी इनडिसिप्लिन बिहेव करिबेनी। दे शुड बी वाइज टॉलरेंट सहिष्णु हेतिबे एंड पब्लिक स्पिरिटेड लोकन का विषय रे भाबुथिबे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट इनकलकेट मतलब डीपली कीप इन द हार्ट इन माइंड जो अक्षर मडांतीनी ताको इनकलकेशन कहबो डीप इनग्रेविंग पोती दबा दरकार ओके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट इनकलकेट among the students the spirit of respect for ethical values नैतिक आदर्श गुड़िक राइट सम्मान पिला मानक भितरे भर्ती करिबा दरकार एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर राइट। ता माने जदि गोटे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज एकेडमी व्हाटएवर से माने गोटे लोक को प्रोड्यूस करूछन्ती गोटे आदर्श मनुष्य तैयारी करूछन्ती से लोकटी टॉलरेंट हेतिबो कल्चर्ड हेतिबो वाइज हेतिबो एथिकल हेतिबो आउ ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करथुबो जन मंगल को प्रमोट करथुबो। एवरीबॉडी क्लियर। एजुकेशन शुड नॉट एट द सेम टाइम बी यूटोपियन। व्हाट इज यूटोपियन? वेल यूटोपियन कहले बुझा जाए अ प्लेस वेयर ऑल इज गुड। यूटोपिया गोटे रेनेसां कांसेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िबो यू विल गेट टू नो एटा It's like talking about a perfect world जो सब किसी जिनसे भला थिबो जो सब किसी जिनसे भला को चेष्टा करे जे एक्चुअली जेटा किछि लवर रहनी। Are you getting what I'm trying to say? So education should not be utopian. It should not make men unable to earn livelihood. अब गोटे लोकटे पढ़िला बहुत पढ़िला एते पढ़िला शेष को रोजगार टे भी कर परलानी से एजुकेशन को व्यवहार करिके ता पेटटा भी पोसी परलानी ताले कोन पाठ पढ़ला। A part of education should be employment oriented. ताको एमिति किछि शिक्षा दिया जिबा दरकार जहा द्वारा से एम्प्लॉयमेंट पाई परिबो निजको गोटे जगह एंगेज करि परिबो। एंड इन दिस रिगार्ड द आइडिया ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इज ग्रेनिंग डाउन धंधामूलक शिक्षा। नाउ यू सी देयर आर सो मेनी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं स्किल इंडिया PMKVY एटसेट्रा 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 कहीं एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू फिल योर टमी विथ सम फूड किस खाइबा जोगाड़ करि परिबा दरकार। एटा धीरे धीरे गेनिंग ग्राउंड मीन्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड गेन ग्राउंड मतलब बीइंग एस्टैब्लिश्ड भारते होची। वी नीड बोथ लिबरल एंड टेक्निकल एजुकेशन। हमको दी प्रकार शिक्षा दरकार ओपन माइंडेड एजुकेशन राइट दैट विल गिव यू द राइट काइंड ऑफ वैल्यूज एंड टेक्निकल एजुकेशन दैट यू मेक यू टेक्निकली साउंड ठीक अछि। बिसाइड तो वर्तमान जो फोकसटा करा जायछि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन को कहा जाउछि। नाउ लुक एट दिस आम देश रे वर्तमान कोन अवस्था we see a country where people are coming out with degrees BA BCom BSc MA MCom MSc and so many but then they are not able to employ themselves neither they get an employment nor they are able to self employ
ना कोठी चाकरी पाउछन्ती ना निजको निजे गोटे चाकरी देई पाउछन्ती काहे वी हैव टू एनालाइज द रीजन सबु इंजीनियरिंग कॉलेज रे गोटे पेपर थाए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट राइट थिला तुमरो फोर्थ रे थिला ना थर्ड रे थिला फोर्थ ईयर रे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब केमिति जने उद्योगी हबो now how many engineers out of an engineering college actually become entrepreneurs they don't become so they don't become Thomas Edison कहे कि ये रिस्क नबो रे बापा बिजनेस बुड़ जो के संभालिबो तको so at the end of the day we create people who are not confident who are not skilled এই ভলিয়া লোক মানে না নিজে সেলফ নিজে को এমপ্লয় করি পারিবে see I'm not blaming out engineers only I'm talking about all things there will be a diploma holder electrical engineer he doesn't know how to do the wiring there will be an ITI mechanic he doesn't know how to open the bike's engine look at this why are you getting educated then so सरीला पर जदि आपनकर कॉन्फिडेंस ही नथिबो then probably you are lacking आपण सेल्फ एम्प्लॉयड तो हेबेनी एम्प्लॉयड भी हेबेनी exactly so that's what we are talking about the system the point is there after all these things we land up and start to work by chance गोसडी पोसडी की गोटे कंपनी रे आपण पसि जिवे that company should grow no with your lack of skills how is it going to grow so the fate is that नुआ कंपनीज खोलिबे आ जथा शीघ्र बंद भी हिजिबे so when ए जो माइक्रो इंडस्ट्री टा स्मॉल हबनी स्मॉल टा मीडियम हबनी मीडियम टा लार्ज हबनी तारे एते संख्या रे लोक मान को एम्प्लॉयमेंट मिलिबो कोडी समस्त कोन गवर्नमेंट जॉब करिवे this is the generic problem this is the problem of the entire country so that's what the system lacks somewhere now sometimes we give too much of importance on technical dimensions physics chemistry engineering banking finance आ ऊपर एते फोकस दिया जाए that the humanitarian aspects are neglected ता माने वर्तमान अपन पारे गोटे कंप्यूटर डीप थिबो जे कि समस्त को दादागिरी करथबो ता कंपनी रे के रहइबा काम करियो तो साडी बोलिबा are you clear so in this way we need a balance between liberal and technical education besides education is characterless if it does not lead to character a great Indian philosopher and guru had spoken the end of education is character शिक्षार अंतिम लक्ष्य होची चरित्र निर्माण तो जदि एजुकेशन सरिला परे जनकर चरित्र तयारी न होला पर्सनालिटी तयारी न होला he is not educated or clear our education must be directed towards inculcating scientific temper in the young we need to make our generation scientific logical not only superstitious we will not superstitious Kichi din ago I had taken the students of academy for a science tour to the regional science park I was very happy that the director himself came to escort all of us say nije asiki he is a scientist and he escorted all of us to take a tour through the park भाई खुशी लगला से कोटे कोटे करी सब जगह जिनसे उडा एक्सप्लेन कले अन्य मान को डायरेक्ट कले आई वाज हैप्पी बिकॉज़ द डायरेक्टर ऑफ द पार्क इज हिमसेल्फ इनटू ट्रेनिंग तो मुझे पछली सर व्हाई डू यू डू दैट यू कुड हैव गिवन इट टू समवन एल्स आपण आउ का कहि पारथांते आपण निजे बुझले आगे देखंतु आज मु फ्री अछि आज कोनोसी मीटिंग नाही कि कोनोसी काम नाही आउ मु चाहे दैट आवर चिल्ड्रन शुड डेवलप विथ अ साइंटिफिक टेम्पर नेक्स्ट जनरेशन से साइंटिफिकली जिनसे गुडा को भाबिबा को चाहू सेति पई वेरेवर आई हैव अ पॉसिबिलिटी to school, to college students, I simply come out and I spend time with them. And since I came to know that a civil service training academy is coming, so I came again because I wanted to test कि पिलांकर scientific temper केते बोला, whether they only understand arts or they want also understand science. So what I was trying to say here that scientific analysis, logical analysis, मु जाटा करूची केते दूर ठीक करूची, केते दूर proper करूची, एई टेम्पर टा पिलांक भितरे आसीबा दरकार. Cooperation, respect, love, understanding of fellow beings, emotional integration are essential qualities of human being which education must reiterate. Reiterate मतलब hit again, answer back, tell again. बारंबार ए जिनस गुडी को ऊपर एजुकेशन एम्फसाइज दबा उचित परस्पर को सहाय्य करबा कॉपरेशन सम्मान दबा भलो पाइबा अंडरस्टैंडिंग रखिबा एटसेट्रा ता बिना एजुकेशन वुड बी impartial. Education must produce mature and integrated personality. आमे immature लोक मान को तयारी कर परिबा नाही. Each citizen's physical, mental, intellectual, moral, spiritual faculties. ये सब जगह होची mental faculties. Okay? Physical माने जने strong हे थिबो physically, mentally strong हे थिबो, intellectually प्रज्ञातार थिबो विकसित हे थिबो, morally नैतिक दृष्टिकोणरु हे थिबो, आ आध्यात्मिक दृष्टिकोणरु all the area should be developed. आमे गोटा को नेग्लेक्ट कले ना असुविधा रे पड़िबा. For example सब जिंस अछि physical अछि, right? Mental अछि, intellectual अछि, morality नाही. He would become a scoundrel. He will exploit, alright? They must be harmoniously developed to the full. I'll talk later. Harmoniously developed to the full.
They must be combined together and should be developed to the fullest. Clear? Thus, education for modern India will have to do away with the elitism. Elitism bujhparcho jo samranta vamsa. We are creating some students who have everything in air conditions, don't we? Air conditioned schools, air conditioned buses, air conditioned colleges, air conditioned universities. So tomorrow also they will expect air conditioned workplace. तामने मार्केट को गला को मध्य गोटे एसी दरकार. So actually we are creating an elite. Okay, यही बड़ी elite सिस्टम education रे हमें बंद कर दवा दरकार. Clear? Which has created a gulf between intelligentsia and the common people. गोटे एमिति गैप टे तैयारी हेछि जो माने इंटेलिजेंट लोक सेमानंकर पढुनी गरीब लोक मान सहित कॉमन लोक मान सहित मैच करूनी मेंटालिटी गेते बड़ गैप हे सरछि ए माने भाबुतन से माने बुधिया आ जो माने के कॉमन असिस्टेंट को मोर कोन करा. ओके, जब तेज दुनिया रोज रो मु दुनिया खोज अछि ए जो गल्फ इज नॉट ब्रिजिंग अवे. दिस हैज ब्लॉक्ड आवर प्रोग्रेस वेयर evolving an egalitarian society. Egalitarian society means we take something from the society, we give something to the society. A development hey parodi. Clear? Our educational system must restructure. Restructure means create again. Create again its curricula. आमे जो curriculum गुडा को तैयारी करके दिन धर की चलिचु ताकु निहाती एबे बदलेबा दरकार. And reallocate facilities. आमे already allocate करि दिछु हमर फैसिलिटी गुडा को पैसा को विनियोग करूछु गोटे दिगरे को दिगरे. What is the budget of India mostly in divulged into defense? You're right. No के पाखापाखि $45 trillion हमें स्पेंड करूछु डिफेंस रे. एजुकेशन रे $1 trillion, $2 trillion, राइट. तो हमें एते पैसा डिफेंस रे करूछु ताको रिएलोकेट करबा so that we don't have teeming thousands who are unemployable literates. Teeming means weak. एमती आम पाखे हजार हजार लोक रहिबेनी जो माने कि unemployable, not unemployed. Mind the word. Employability is not equal to employment. Job getter is not equal to job hopper. जो लोकर eligibility थाए, right, से गोटे कामटे कर परिबो. Eligibility is not equal to employability. केवल eligibility थिले आपन को चाकरी मिल जेवई कि माने नाही. You have to be employable. एई चाकरी पाई बीएससी हेतले चलिबो. एटा eligibility. बट आउ जो स्किल थिले आपन प्रकृति से कामटा करि पाइबे, that is employability. आमे वर्तमान employable unemployable literate को तयारी करछु. साक्षर पाठ सेटा पढि चंदी किंतु चाकरी पाई रेडी नांती. तांको आमे ओवरकम करबा दरकार. Our system of education must serve to produce. Our system टाको आमे एमिति चेंज करबा that we produce men and women who can think for themselves. जदि वो एम्प्लॉयमेंट न मिलुची से माने निज पई चिंता करि परथिबे into something productive and make a concrete contribution. आज समय जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट माने बाहर चंती से माने कोन निज को एंगेज करू नांती करू चंती कोन करू चंती कहे टिके से माने सब गोटे गोटे दुकान खोली के बस चंती. से दुकान रा ना होची कोचिंग सेंटर. यस नो बिकॉज आपण जो थियोरेटिकल मॉडल रे पढिले से थियोरेटिकल नॉलेज को यूज करके आपण कोनोसी जॉब करि परलेनी. तो बर्तन पहुंची गला से थियोरी टाको नेक्स्ट जनरेशन को पास करी this time taking some money. So if that is the employment people think in India, we are going to dogs as a country. That will not develop the country. Concrete contribution भी होगा दरकार ना. Something really productive, ethically, morally, spiritually, intellectually, technically. Clear? Concrete contribution न हेले ताले education में productive होगा नहीं. What do you mean concrete contribution? Something which can be measured, which can be felt. Clear? जदि गोटे एजुकेशन रो पास करके सिस्टम भीतर देखि गोटे एम्प्लॉयबल पिलाटे बाहरिला किछि नले सेल्फ एम्प्लॉय करथुवा पिलाटे बाहरथुवा निजर रोजगार टाको निजे संभाळी पारथुवा. वी हैव हर्ड्स crores and crores of engineers, crores and crores of lawyers cramming around everywhere. कोन करिबे एते सब एते एम्फसिस कोन एपटे प्लम्बर टे मिलुनी एपटे इलेक्ट्रिशियन मिलुनांदी फैन रिपेयर कलाला मिलुनांदी सेपटे किंतु गदा 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 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैंकरिंग फॉर जॉब्स. प्रॉब्लम निहाती अछि. नेशन रो प्रॉस्पेरिटी रे मु कंक्रीट कंट्रीब्यूशन करथि मु देश पई किछि करि पाथि. Besides, our education system must be organized on a pattern that caters to the country's needs. देशर वर्तमान रो आवश्यकताटा कोन आसंता समय रे कोन जेमति से जापानीज मिनिस्टर 14 वर्ष पर कथा भाबुतला सेही बली भाबरे हमको भाबिको पड़िबो कि आसंता समय रे हमरो कोन दरकार
अवश्यम्भावी कौन सेटा को हमें फोकस करबा आमे दूरदर्शिका नाही वी आर नॉट फार साइटेड in terms of our planning आमे सब कौन करू वी फॉलो द प्रॉब्लम एबे काम करबा लोकंकर अभाव चलो स्किल इंडिया खोल दिया have vocational education be skill तापर एते भाइबे प्लम्बर फिटर इलेक्ट्रिशियन तांग बचके नथियो and then they would be good for nothing else कहन को आगे जाना नथियो so it is not a far sighted planning are you clear well finally तो अपन सब देखि नथि गळी कंदी रे सब छोट छोट दुकान खोलिबा से दुकान रे बते 5टा बिस्कुट 6टा चिप्स पैकेट आ कोन टिके थिबो एडी की कैबिन टे खोल थिबो सेठी दिन सारा से बसिथिबो बिकी बिकी की केते बिके केटा चिप्स पैकेट बिके सब माल खाई जाय गोटे दिन रे तने भाबंतु दिन सारा 6 घंटा 7 घंटा बसी की 8 घंटा बसी की से हार्डली 10 टका 15 टका पाउतो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर आ जदी सेठी गोटे यंग लोकटे बसथिबो यंग वुमन टे बसथिबो तारो डिजास्टर्स कथा हो किछि नाही बिकॉज़ ही इज स्पेंडिंग द प्रोडक्टिव एज ऑफ हिज लाइफ इन डूइंग नथिंग प्रैक्टिकली नथिंग आर यू क्लियर सेटा केबे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नुह कहना भरण पोषण तो करि परिबनी 15 टका लाभ तो आज 10टा चिप्स पैकेट बिकी तमे 15 टका लाभ पाइलो मासको 450 टका चलियो किंदी वेल so we require more skilled hands for industries trade profession social services year after year हमको skilled hand माने प्रत्येक टी क्षेत्र दरकार finally school education must be universal हे सलानी क्वालिटी पछकता आज सर्वशिक्षा अच्छी किंतु पिला केवल मिड डे मील पाई जाउची बहुत जगह एंजॉय तो करूनी पाठ को ता छड़ा बाकी जो जिनस गुडा इश्यूज गुडा सेटा समस्त आपण जानिछन्ते से जदी नगला से निजे भी से डिमांड करि परिबनी 6 रु 14 वर्ष को हम राइट टू एजुकेशन दे देले तुमको अधिकार टे न मिलले तुम जाई कोर्ट रे दरस्त हबो 6 रु 14 वर्ष पिला को कोर्ट खुजियो तो तार राइट टा सिक्योर करबा दायित्व सोसाइटी रो तो बापा मां कर जदी बापा मां स्कूल भी न पठेले बापा मां कहिले आज जानी आज एई कामडा करिया से कामडा करियो आज दिस दैट ही विल ओबे वेल बट कॉलेज एजुकेशन मस्ट बी नेसेसरीली फॉर फ्यू मु मध्य गांधी कर एई आइडियोलॉजी को फुली सब्सक्राइब करे समस्त को बढ़िया क्वालिटी रो प्राइमरी इफ पॉसिबल सेकेंडरी एजुकेशन दबा उचित किंतु टर्शियरी एजुकेशन केवल किछि लोकन को दबा दरकार दोज हु आर एलिजिबल कहीं ना आपण के केयरफुली भाबंतु आपण केते पाठ पढि छथि किंतु जीवन धारण पई जीविका पई आपण एतिके व्यवहार करछथि सपोज देयर इज अ बैंक क्लर्क से कोन थिबा दरकार इंग्लिश पढि परथो बुझि परथो लेखि परथो अकाउंट्स कर परथो सो हां मिसरा बेटा व्हाटएवर ओके तो एतिके करि परले यू आर एन एलिजिबल बैंक क्लर्क तो तमने बाकी जो जहा जहा आपण पढिले हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉल साइंस दिस दैट जहा जहा पढि के असले सेटा सब व्यवहार होची अब सपोज यू आर टीचर आपन को जो सब्जेक्ट दिया हो सेटा को तो आपन पढेबे तो सेही पाठटा काम रे आसीबो बाकी सब जगह आसेनी डिपेंड्स मु जदी गोटिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट रो टीचर हेली ताहले मु जो साइंस टा पढिथिली स्कूल रे फोटोसिंथेसिस तार कोन काम रे आसीबो से चेष्टा करि पारे ताको यूटिलाइज करिया पई ही कैन मर्ज थिंक अबाउट व्हाट अ गैराज मैकेनिक से जते जे पाठ पढितो से जो दिचटा स्किल नॉट खोलिबा नॉट जोड़िबा जिंस को बुझिबा सेथिरे से रोजगार करनी जीवनटा चलि नै सो दैट इज व्हाट इज द कॉमन रूल आमे पढिथिबा एते ज्ञान रु अल्प किछिटा ज्ञान को व्यवहार करि कि मध्य वी कैन लिव अ सफिशिएंट फुल फ्लेजेड लाइफ बट प्राइमरी एजुकेशन रे एई नॉलेज रो पूर्ण विकास हेतिबा दरकार ए नुह कि प्राइमरी एजुकेशन माने मैथ कॉम्प्रोमाइज साइंस कॉम्प्रोमाइज एनवायरनमेंट को बुझेनी से किछि करि परिबो देन इछि जण लोकन को ही हायर एजुकेशन को निया जो माने प्रकृति तापई मेटल रखिथिबे ए जो छत्तु फटेला भड़िया कॉलेजेस डिस्टेंस कॉलेजेस खुली खुली डिग्री बांटिबा आ ता सहित कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को तयारी करबा राइट तांको नै कि देश केमथि आगु चलिबो हाउ कैन वी प्रोग्रेस सो इट इज द टाइम दैट आवर गवर्नमेंट गिव एजुकेशन द प्रायोरिटी इट रिक्वायर्स जो प्रकार रो प्राधान्य वर्तमान हमर सरकार दबा कथा सेतिके हमें दबा Are you clear? So the objective of discussion was to make you aware about the fallacies of Indian education system. That's it.